Okay. Mm, Today we're going to start organizational structure. No, I think I have already completed this one also. Yes. Oh, yes. Today we're going to start Unit 5, that is Industrial Ecology and Recycling Industry. Industrial ecology means whatever the means pollutions or whatever the garbages that are been that are been coming out from the industry. So how the processes and what are the processes to make it recycle, this we're going to discuss here. Industrial ecology is an approach that applies the ecosystem metaphor, and model such that individual systems to be restructured in order to make them compatible with way natural ecosystem functions. Okay, look at here. Uh, a literary word, a literature word been used here. Ecosystem metaphor. You know metaphor. मेटाफोर किसे कहते हैं? लिटरेचर में एक टर्म है सिमिलीज, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, ये सब लिटरेरी टर्म्स है. तो यहाँ मेटाफोर इसलिए यूज किया जाता है. एक्चुअली मेटाफोर कहते हैं उसे, किसी चीज को हम किसी के साथ जब वो हम उसका सिमिलरिटीज खोजते हैं या फिर एग्जाम्पल सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर. व्हेन वी सेट एन एग्जाम्पल on the basis of some things. Okay, that is called metaphor in English literature. So here, the metaphor is used as a, you can say, a system, or you can say it is used as a model, to restructure in order to make them compatible with the way ecosystem functions. Suppose, for an example, the use of a plastic. Okay, plastic being used, after using we throw it out the plastics. Okay, and after that it has been recycled. Okay, and it has been again used for different purposes. This is called in industrial ecology. Now, okay, this is called industrial ecology. Madhusmita, I insist you to write this definition, as because the things are not been means whatever the definitions or whatever the structure been given over here about the industrial ecology, it's completely means the points are not been set accordingly. So at the time when you prepare for your examinations or preparing your notes now, it will going to make you difficult. You will find difficult. Sir, I So have a I doubt. yes, tell me. Sir, when you said that about plastic or ethylene, सर बेसिकली अगर देखा जाए बेसिकली प्लास्टिक को तब लाया गया था जब मतलब कि बेसिकली जितने भी जो लाइक प्लांट्स हो या फिर वैसा कुछ उससे हम लोग मतलब कि एक्सेसिव यूज हो रहा था एंड डिस्ट्रक्शन के वजह से हो रहा था बट अभी अगर हम लोग बोले तो ये प्लास्टिक ही हम लोग के लिए एक मेनेज बन चुका है तो इस केस में लाइक रिसाइक मतलब कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक हम एमबीए का ये हमारे एमबीए के सिलेबस में है तो हाउ इट इज बीइंग डेल्ट विद दिस Means how लाइक this plastics been recycled. यस मतलब कि दिस एंटायर थिंग लाइक अभी हम लोग लाइक सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग और इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बात कर रहे हैं Hmm. तो बट प्लास्टिक एंड इट्स थिंग इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक That's मोस्ट why ऑफ na, द it's never ending मोस्ट topic. ऑफ द That's why it वेस्ट is been. लेकिन रिसाइकल्ड भी अगर होता है तो मोस्ट ऑफ द थिंग उसका वेस्ट होता है इट्स बेसिकली हजार्डियस थिंग ही है Hmm. and the more it get recycled the more toxic it becomes. Definitely. The more it is getting recycled, the more it get toxic. Okay. So the problem is So how it is to curb injurious to it? health. Means according to you, how, it's may going to cause the injurious to our health. It will going to affect our health. That's mean that you mean. Yes sir, because in our Okay. everyday Okay. life from a minimal thing itself like we are using plastic in every little bit Definitely. thing. Sure, sure, sure. Yes, yes, yes. Whenever we used to go shops, or whenever we used to go for a shopping and all, it's now become a fashionable for us not to carry any bags and all. We just go to the shoppings and all, and you purchase
bags and all. Okay, now the most important part I am going to tell it, say it, that I don't know whether it has been using in the Jamshedpur area or not, but apart from Jamshedpur, if you visit to some other state, other district, or other country, you will find some micron meters, some using of plastics based on some microns are there, some 80 microns. I forgot the actual measurement of the use of the plastics. A minimum 8 micron plastics, or the government has strictly followed, given us the guideline, that to use the plastics of this particular level, which can be destroyable. Okay, I also given you an example of this recycling of plastics. I have already tell you, but you have, I think you have forgotten, because it is hazardous or because it is toxic to our health. That is why now the plastics which are being hazardous or which are being effects toward us, they are by using some chemicals and all. We put it for the construction purpose. You know, for the construction purpose, there is a use of plastics. For an example, I am giving you a particular example in the Kadma area. That is the roads which has been going to Area Kadma and especially. especially farm area, which has been the connectivity roads between the Kadama and farm area. The roads, already the roads which been prepared, it's full of plastics. Okay, the plastics which has been used are completely, you can say, the hazardous plastics, the plastic which is not been good for health. Those plastics are been assembled, collected by using some chemicals, and by using some recycling process. It is been used for the construction purpose and the use of the roads. Okay, so the plastic, those plastics which are above 80 or 8 microns, those plastics are hazardous according to the government rules and regulation. And for those plastics which are being hazardous, they are been used, chemically been processed, recycled, and they are using for construction purpose, they are using for some glue, and they are also using for the development purpose. Okay, that is why now a lot of technologies are being updated, upgraded, and that is why it has been wrongly, I don't know, it has been, now the assumption is wrong that now the plastics are being hazardous, because those plastics are being carried, or those plastics are being collected by rack pickers. As you visit to the platforms, areas of platform, if you visit to the railway stations, the rack pickers are there who collect those plastics. Their duty is to just to collect those plastics. Okay, also, and the plastics are being they are being they are being collected, and they are being thrown to some areas where those are being refined, recycled, with using some chemicals. They are being transformed into some glue. They are being transformed to some construction purpose. They are being used. So nowadays it's a very much effective way, these plastics are being recycled. Okay, also, for I'm telling you, I don't know whether it has been it has been available here or not. Some shopping malls, if you go to the some malls and all, they are giving you the plastics below those microns. The government had selected particular slabs are there. Okay, particular slabs or particular ranks are there. Below those rank, those plastics are used, which can be easily disposable and which can easily be destroyed. Okay, so few plastics now are there which has been used by, such as the black plastics. Okay, the black polythenes. There is not plastics. I'm talking about the polythenes, and you are also talking about the polythenes, polythene bags and all. Yes, so Suppose you're going, especially the ethylene products, all. the black polythenes and all. Whenever you go to the fish market, the fish mongers or the fish sellers, they provide us those plastic, black plastics. Those are chemical based plastics. And now, also government has imposed fine up to minimum amount, but somehow it's been done in a very hide and seek way. So ultimately, I think the
government and its officials staffs need to follow those. So yes, now it is now this era, in this era, living in this era, it is can easily be said that plastic can be destroyable, not destroyable, but yes, we can recycle those plastics in a for better purpose. Okay, for example, पहले जब हमारे छत कभी टूट जाते थे या जो छत का कंस्ट्रक्शन होता था स्पेसिफिकली फॉर द सिविल डिपार्टमेंट, तो वो प्लास्टिक उसमें फिर दोबारा उस छत को फिर कोड़ के उसको अलग से फिर सीमेंट प्लास्टिक डाल के वो किया जाता है, बट अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है, बाय द यूज ऑफ दिस प्लास्टिक्स ओनली एक ग्लू तैयार किया गया है, उस ग्लू को आप पत्थर से पत्थर तक को चिपका सकते हो, वो आपको वो ब्रेकेबल कभी नहीं होगा। सो मतलब पत्थर से आप सोच नहीं सकते हो, वो पत्थर क्या पत्थर, वो जो स्लेट, जो एक मोटा स्लेट होता है, जो हम स्लैब्स होते हैं जो हम लोग किचन में लगाते हैं, किचन प्लेसेस में लगाते हैं स्लैब्स एंड ऑल, उस पत्थर को भी ये प्लास्टिक्स दे ज्वाइन करते हैं। Okay, so now it is very much easier to say that these plastics can be easily destroyable and it can be easily been recycled. द Okay. थिंग इज कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है एक टाउनशिप के अंडर अंडर में ही, जैसे कि हम लोग टाटा के अंडर में बेसिकली इस एरिया में, तो बेसिकली ये जितने भी प्रोग्रेस वगैरह है ये सिर्फ टाटा के अंडर में अंडरटेकिंग है, तो ये वो कर रहा है, लाइक ई वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर मेकिंग ई प्लास्टिक मेड वेस्ट से जो रोड बना हो। बट व्हाट अबाउट Hmm. दोज एरियाज जहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हुआ नहीं है, हाँ, जहां पर उतना हाँ, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, जस्ट अंडर अबाउट डेवलप्ड है नहीं। प्लास्टिक, अगर हम लोग देखते हैं कि लाइक सीमेंट हो, सीमेंट फैक्ट्री या फिर ब्लास्ट फर्नेस, और वहां से जो फ्लाई ऐश या फिर मधुस्मिता, आपका वॉइस फिर ब्रेक हो रहा है, वॉइस इज योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो। Okay, I understood your problem. I understood your questions. The what about those areas where cement plants are been there, where the garbages are being excreted out from those particular areas. Okay, ashes are being fly, so lot of health issues are there. So for that, some economic progress, some treatment, some selective process especially to those urban areas are there. Okay, some treatments are there to purify those air, or some treatments are there as you go towards the Kodarma region. I'm telling you, as you go to the Kodarma region or as you proceed toward the Chaibasa region, okay, the areas are very greeneries, but some plants, some industrial sectors are there. If you cross those industrial sectors, you will going to find that mm, uh, it- it means within 20 meters, within 20 meters of distance, their purification cylinders have been provided. Purification cylinders are there. Okay, in the what you call it, in the poles of electricity poles, na, some cylinders are there. They are called air purification cylinders are there. They just purify those airs or those gases, they are purified. So lot of things are there nowadays. So it doesn't matter that whether the industrial area which has been constructed in the urban areas, for those urban peoples, what they will going to do with this particular things and all. So these are the following treatments are there. Water purification treatments are also being there, and nowadays the governments, the authorities have been provided taking very strict decisions not to throw the garbages in particularly in those areas, not to dump those garbages in those particular areas where the peoples are residing. Okay, it's a very strict or the treatments are, if you means dump those garbages in those urban areas, so you need to, what you can say, you need to do the retreatment, you need to do the retreatment to excrete out whatever the gases are being excreted out from those garbages. They are need to be purified. So before planting or before any plantations of any industrial in those urban areas, these are the precautions or these are the measures been needed to be taken by the authorities and all. Okay,
So I think if you go to the urban areas, you will find these are the treatments, or these are the precautions or measures being taken. Okay. So it's very now these are the, you can say, these matters are very sophisticated matter. And before any organizations or what you can say, any plants, if any managements want to install any plantations to those urban areas, before that they need to check the alkalinity of the soil, whether if I am planting any my industrial in this particular area, what are the precautions and what are the measures I am going to uh, I need to follow. And whether those areas are means those areas where I'm going to make the plantations, where the management is going to plant their industrial, whether those agricultural or barren lands or not. So lot of precautions before planting those things, lot of precautions are being taken. Nowadays purification cylinders have been installed over there, so that the people residing in the urban areas not been affected from those gases or ashly materials, ashly poisonous gases which are being spreading out in those areas. So lot of precautions are being taken. Okay. और इसके बाद भी वाटर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, सपोज वो आप वहां पर गार्बेजेस को डंप नहीं कर सकते हो। अगर वहां गार्बेजेस आपको डंप करना है तो आपको वो ट्रीटमेंट्स करके उसको फिर प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो अभी वो नहीं है, और अभी बहुत बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। आप कहीं भी चले जाओ, आप टुवर्ड्स चाईबासा, इफ यू गो टुवर्ड्स चाईबासा, लॉट ऑफ प्लांटेशंस आर देयर। आप उसके बगल से चले जाइए, देखिए कितने पेड़ पौधे लगाया गया है। Lot of greeneries are there. Okay, lot of air purification measurements precautions are being taken, lot of greeneries are there। और अगर कोई इंडस्ट्रियल या फिर कोई वहां पर प्लांटेशंस करते हैं, वो शहर अर्बन एरिया से बहुत दूर उलोंग करते हैं, ताकि उस तरह का कोई हेल्थ इश्यूज इंसानों पे ना हो। कुड आई मेक यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू? हेलो, इज इट क्लियर टू यू? Madhusmita, am I audible? Yes, Is it sir, clear to you you? are audible, but I'm actually not clear because about this. Your voice is breaking, Madhusmita। आप क्या? हेलो। तो आप एक बार लिंक दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज। जस्ट दोबारा ज्वाइन कीजिए। यस। हेलो। Yes, sir. हाँ बोलो, क्या कहाँ पर नहीं हुआ है, बोलो। So, actually, my doubt was this कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बात तब आती है जब ऑलरेडी नेचुरल इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी वो हैम्पर हो चुका होता है। तो व्हाई नॉट फ्रॉम डे वन व्हेन यू स्टार्ट फॉर दैट वो उसके लिए किया जाए, मतलब कि स्टार्टिंग से ही। बट ये मैंने जो टॉपिक के बारे में बोला कि अपने में ही एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक सा है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नहीं, जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ? ये एक टॉपिक है जो कि इसका कोई नो एंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यस सर, मेरा वही मैं बोल रही थी। लेकिन हम लोग क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है। हम लोग तो प्रिकॉशंस ले ही सकते हैं ना, तो बहुत सारा अभी प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रिकॉशंस नहीं लिया जा रहा है। प्रिकॉशंस बहुत कुछ लिया जा रहा है, आगे भी इससे लिया जाएगा। और भी बहुत तरीका है जिसको गवर्नमेंट और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, और गवर्नमेंट और भी बहुत सारे इस प्रिकॉशंस को लेगा। आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है। एक्सलरी मधुस्मिता, कभी आप एक्सलरी गए हो हमारे जमशेदपुर एरियाज के एक्सलरी में? दिस आर द फैक्ट्स आई एम यस टोइंग। सर, जस्ट अ दिस आर द विजिट। एक बार दिस आर विजिट द पे गई थी फैक्ट्स। मैं स्कूल की तरफ से। हाँ। ओके, तो स्कूल में गए थे, अभी फिलहाल अब गए नहीं हो वहां पर। इकोलॉजी के ऊपर में बहुत सारा डिबेट्स हुआ है, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। एंड
उसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल जो दिया गया है, आप कभी बिष्टुपुर वाला जो सबसे बड़ा पीएम मॉल है, आप कभी देखे हो उस पीएम मॉल को? यस सर, जस्ट वन। उसके पीछे जो बहुत बड़ा पहाड़ है, आप जानते हो उसका कहानी हाँ क्या है? हाँ हाँ, सर। क्या बोलो तो? नहीं, नहीं सर, उसका कहानी तो अ, वो पहाड़ जो है वो एक आर्टिफिशियल माउंटेन है, वो पहाड़ है, इट्स एन आर्टिफिशियल माउंटेन। किससे बना है मालूम है? नो lot of सर। garbages lot of garbages, okay, lot of garbages are been thrown they and those garbages वो एक डंप किया जाता था। उसको क्या किया जाता, उसमें फिर उस चीज को डंप करने के बाद में बहुत सारा प्रोसेस करके उसे एक मतलब एक ग्रीनरीज पहाड़ तैयार किया गया है। ये सबसे जीता जागता एक एग्जाम्पल है जो झारखंड रीजन में शायद ही कोई ऐसा होगा। दैट्स व्हाई बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया very much the best example of ecology, how they are maintaining those ecology। जितनी भी वेस्टेजेस है वहां पर जाके डंप किया जाता था, और गवर्नमेंट ने, टाटा ने, उसके जो इंजीनियर्स है, ये सोचा कि हम जो इतने डंप करते हैं इसका तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज देम, वी नीड टू रिसाइकल देम, अदरवाइज ये तो पूरा पहाड़ बन जाएगा और हैम्पर होगा इसमें। तो उसकी वजह से बहुत सारा इंजीनियर्स ने उस चीज को एक आर्टिफिशियल माउंटेन के रूप में दे दिया। आप कभी उसमें जाइए, पीछे आप शॉपिंग मॉल के थर्ड फ्लोर जाइए और पहाड़ को नजदीक से आप देखिए, पूरा ग्रीनरीज बन गया है, प्लांटेशन हो गया है, लॉट ऑफ प्लांट्स आर देयर, ठीक है, एकदम फुल माउंटेन एंड द सेम चीज। और वही प्रोसेस जो है अब एक्सेलराई की जो न्यू बिल्डिंग्स बना है, आप जो जब ये रोड में चले जाते हो, क्या बोलता मैं भूल ही जाता हूँ यार, उतना मुझे पता नहीं, मैं नियर अबाउट इन द ईयर 2021-22 में विजिट किया था एक्सेलरेट, वो मेन बिल्डिंग के पीछे वाला जहां पर हॉस्टलर्स रहते हैं, ये जो रिवर एरिया चले जाते हैं ना हम लोग, लॉन्ग एक रिवर एरिया, क्या बोलते हैं उसे, हम लोग जब आई फॉरगॉट द पर्टिकुलर एरिया, हम लोग जब साक्षी की तरफ आते हैं मानगो से, तो एक इधर जो दाएं या बाएं मुड़ने वाला एक रोड है जो सीधा रिवर रोड चला जाता है ना, वहां पर एक्सेलराई का एक मतलब आउटर पार्ट है जहां पर हॉस्टलर्स, द हॉस्टलर यूज्ड टू स्टे ओवर देयर, ओके, द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट दे स्टे ओवर देयर। आप कभी उस जगह पे जाइए, द सेम प्रोसेस, the same thing, the same process is being followed there also. Lot of garbages are being dumped over there, and now the process is being turned, the administrative is looking after this। अब प्रोसेस ये चल रहा है कि उस चीज को पूरा एक ग्रीनरीज, एक मतलब नाउ आर्टिफिशियल एक माउंटेन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इन द सेंस मतलब क्या, प्लास्टिक मेड या फिर कोई ऐसा नहीं, उसमें पेड़ पौधे लग रहा है, अब पूरा मतलब वो एक ग्रीनरी बन गया है, एक जस्ट लाइक ए पार्क। वो एक उसमें प्लांट्स वगैरह बहुत सारा कुछ लग गया है, अब जाके देख के आइए वो चीज, वो इट्स बिग एग्जांपल ऑफ दिस इकोलॉजी, हाउ दिस इकोलॉजी बीइंग इज बीइंग मेंटेन्ड ओवर देयर। तो ठीक है, तो ये एक सबसे और भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये सब चीज हमने सर्वे किया था, ये चीज कि इकोसिस्टम को अगर बचाना है, तो अगर इस तरह से किया जाए तो इकोसिस्टम कभी बचेगा ही नहीं। लेकिन अभी प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है। आप अगर वेस्ट बंगाल चले जाओ, वेस्ट बंगाल में एक शियालदा से आप अगर आगे निकल जाते हो, एक खड़दा बोल के स्टेशन होता है, जहां पर ईस्टर्न रीजन की जितने भी गंदगी है, जितने भी वेस्टेजेस है, वहां डंप किया जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो, वहां पर भी उस चीज को प्लांट्स पौधे लगा के उसमें मिट्टी डाल के उस चीज को धीरे 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 वो पूरा मतलब जिससे एक पूरा बहुत बड़ा एक माउंटेन या शेप्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो नाउ द प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड, ओके। और क्या किया जा रहा है, इस डंप को, इस वेस्टेजेस को, सॉलिड वेस्ट को बहुत सारा केमिकल्स यूज करने के बाद वो फिर ऐसे कोई जगह जहां पर गड्ढे जो हो गया है, रोड्स का, रोड्स नहीं, ऐसे बहुत सारे जो गड्ढे बढ़ गए हैं या फिर डैम्स में बेसिकली वो सब यूटिलाइजेशन होता है। तो गवर्नमेंट ना कभी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के ऊपर हमेशा ही इस चीज के ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नॉन एंडिंग टॉपिक है, यस इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक, बट यस कि जहां इंसान रहेगा गंदगी तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन उसका एक स्टेप्स या मेजरमेंट करके कुछ हद तक, बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया गया है। ओके, बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया गया है। ठीक है,
और इस तरह का वेस्ट को हम लैंडफिल में यूज कर सकते हैं, डिपोजिट इन द लैंडफिल। फिर एनवायरमेंटल, उसके बाद जो भी डिचेस है, लॉट ऑफ स्मॉल डिचेस आर देयर, उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल का अभी रिसाइकलिंग इन द करंट ईयर, आई एम टेलिंग यू, वेस्ट रिसाइकलिंग का, वेस्ट डिस्पोजल का रिसाइकलिंग जो है अभी बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा इसका बढ़ गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा इसका रिसाइकलिंग अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, हर जगह हो रहा है, गंदगी हो रहा है, केमिकल्स बाहर है हो रहा है। इंडस्ट्रियल मेजरमेंट तो होना चाहिए। नाउ वी आर लिविंग इन द एरा विद टू 5.0, इंडस्ट्रियल एरिया इसे 5.0 कहा जाता है। ठीक है, वी आर लिविंग इन द एरिया इंडस्ट्रियल 5.0। नाउ वी नीड टू डेवलप ना, अदरवाइज अगर ये सब कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लोग रह ही जाएंगे। तो वी आर लिविंग इन द एरा 5.0, बट वेयर इंडस्ट्री अगर है तो वहां गार्बेजेस, वहां सॉलिड वेस्ट, ये सब तो निकलेगा ही। लेकिन हाँ, उसके उसे हम किस तरह से रिसाइकलिंग करते हैं, दैट इज द दैट इज द वे। तो आप अगर इस जगह चले जाइए, आप देखिए कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है, किस तरह इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड government administration is taking very very much means large steps to control this, what you can say, waste एवरी डे नाउ। आप लोग जानते हैं कि सीटी बजा के वो गाना बजाया, गाड़ी वाला आया तो कचरा घर से कचरा निकाल। तो ये जो कचरा घर से कलेक्ट करता है, वो डम करते हैं, कोई एक जगह जाके वो लोग डम करते हैं। और सेम वो प्रोसेस में ऐसा कुछ गवर्नमेंट अभी इसका प्रोसेस कर रहा है कि वो धीरे धीरे कुछ मतलब क्या, आपको मैं कितना विस्तारित रूप से बताऊंगा, आप नहीं जाओगे तो ना आपको पता नहीं चलेगा। नाउ लॉट ऑफ पीपल्स जिसका अर्निंग्स कम था, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस काम में लगे हुए हैं, उनको बकायदा पैसा मिलता है। दे दे आर बीइंग पेड अ वेरी गुड लमसम अमाउंट ऑफ सैलरी। उनका काम होता है उस गार्बेजेस वेस्ट जो हमारे यहाँ से जाते हैं, उसमें कुछ कुछ जो वेस्टेजेस होता है जो कि रिसाइकिल हो सकता है, उसे अलग किया जाता है। और कुछ कुछ जो वेस्टेज होता है जिसको रिसाइकलिंग करने के बाद नहीं होता है, उसको एक अलग कैटेगरीज में रखा गया है। और अकॉर्डिंग टू दोज पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज में उसे फिर एक मशीन, यहाँ पर भी इंस्टॉल है, आप मशीन, आप जाइएगा वहां पर एक मशीन इंस्टॉल किया हुआ है आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। आप अगर जाइएगा, अ मशीन इज बीइंग सेट where those means plastics which is being undisposable, not cannot be disposable, those plastics आप वहां पर उसको रिसाइकिल किया जाता है। उसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट यूज उसे किया जा रहा है। इस तरह के, अदरवाइज इतना कचरा कहाँ से कलेक्ट करके, ये तो फिर हीप हो जाएगा, इंसान कम कचरा ज्यादा हो जाएगा। ओके, आप अगर कोई प्लेटफॉर्म में चले जाइए, इफ यू विजिट टू द हावड़ा बिग प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशन एंड ऑल, आप वहां पर जाइए, जो बॉटल्स हम लोग पानी पीते हैं, बिस्लरी हो या एक्वाफिना हो, वट एवर द प्लास्टिक बॉटल्स हैं, एक बहुत बड़ा एक स्टेशन में ही एक बहुत बड़ा ऐसे कुछ बना हुआ है जिसमें आप वो प्लास्टिक डाल दीजिए, आप मशीन्स देयर उसे क्रश करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, और उसे फिर डिफरेंट डिफरेंट यूसेस में किया जा रहा है। तो प्लास्टिक को, ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है जिसमें इसको कभी जिंदगी भर के लिए ऐसा खत्म नहीं किया जा सकता। यस, हमें अगर आगे बढ़ना है तो इसको साइड में रख के, इसको रिसाइकलिंग करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ अदरवाइज नहीं है। एनीवे anyway, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है इस रिलेटेड? हेलो, Yes, sir. और कुछ क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? No, sir. ओके, ठीक है। An environmental management system (EMS) is a tool that is continuously growing in importance of for companies. Most companies needed to manage their product, services, employee safety, public opinion, environmental impact, and other related opportunities. Okay, so what is environmental management system? It is a tool that is continuously growing in importance for companies. Most companies needed to manage their product, services, employee safety,
public opinion, environmental impact, and other related opportunities. Okay, so this is the work of an environmental management system. They look after those company, they look after the safety, public opinions, what are the environmental impact, mm, uh, setup of the companies, and many other opportunities. They're going to look after that. And EMS encompasses the method and means to manage all those aspects within any organizations and help to run and document in program for the environmental related to the management. If you want to become a certified ISO 14001 to them, we will offer all in one certificate package. Oh God, मैम ने इसको भी कॉपी कर दिया. God, disgusting. Madhusmita, if you have a copy with you, you can write. Yeah, Yes, sir. वो पूरा एकदम कहाँ से उठा के नोट्स चिपका दिया पता नहीं. व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट? अच्छा, मधुस्मिता, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? हेलो, आपके हिसाब से इसका तोड़ क्या है? मैंने तो बहुत सारा एग्जांपल्स आपको दिया है, वेदर आई डोंट नो वेदर यू आर एग्री विथ माय एग्जांपल्स और नॉट, बट यस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. बट अकॉर्डिंग टू यू, क्या हो सकता है इसका रिजल्ट, क्या हो सकता है मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का, रिसाइकलिंग का? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड व्हाट आर द मेजरमेंट? क्योंकि सर आपने जैसे बोला कि लैंडफिल हो रहा है, लैंडफिल तो सबसे लास्ट स्टेप होता है जब कोई भी वेस्ट अब और रिसाइकल नहीं हो सकता है, वो अपना एक लिमिट हिट कर चुका होता है टॉक्सिक लेवल का, तब जाके हम्म. लैंडफिल होता है. एंड हम्म. लैंडफिल हम्म. मधुसूदन, फिर डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करो. आपका आपका सिग्नल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. यस, अब बोलो. हेलो. हेलो. बोलो. यस. सर वही मैं बोल रही हूँ कि लैंडफिल ठीक है. वाले के बारे में ही. लैंडफिल इज द लास्ट ऑप्शन. ओके, लैंडफिल यस इज द लास्ट सर, ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन वही है जब अपना ठीक. टॉक्सिक लिमिट हिट कर चुका होता है और ठीक है. रिसाइकल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इन दी लैंडफिल इज द एंड हम लास्ट ऑप्शन. लोग नेचुरल इकोसिस्टम को वो हो ही रहा है, इफेक्ट हो ही रहा है. तो व्हाई नॉट, क्योंकि देखिए सर जितनी भी इंडस्ट्रीज है और वो टॉप लेवल की इंडस्ट्री हो एंड वट एवर इट इज, तो उनमें जैसे कि मैं अभी एमबीए कर रही हूँ, तो आई एम रीडिंग दिस पेपर एंड दैट इज इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, जिसमें एक टॉपिक है. तो व्हाई नॉट फ्रॉम डे वन से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक ओवर हाइप हो चुका है कि यस वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एंड नॉट. लेकिन ये चीज अगर शुरू से कर रहे होते तो हम लोग का अभी ये मतलब कि सिचुएशन नहीं होता. तो अभी सिचुएशन क्या है मधुस्मिता? इफ आई आस्क यू, व्हाट इज द सिचुएशन करेंटली राइट नाउ? करंटली सिचुएशन क्या हो रहा है करेंट? आपका डिस्टर्ब हो रहा है. सिचुएशन अभी क्या हो रहा है? मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया है या हद से गुजरते जा रहा है? से ये भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरह से हो रहा है. हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, because definitely it's now been beyond the अब level, जैसे फॉर beyond the reach. एग्जाम्पल जैसे कि सर ताजमहल का ही हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल. अभी हम्म. इतने टाइम से वहां पे मथुरा रिफाइनरी थी तो मतलब कि लाइक तब उसको कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग. बट जब किसी एक इन्वायरमेंटलिस्ट की नजर उस पे जाती कि लाइक ताजमहल इज बीइंग गेटिंग कोरोडेड एंड एवरीथिंग, तब एक्शन लिया जाता है एंड सारे केसेस फाइल होते हैं एंड पिटिशन वगैरह सब कुछ लगता है. बट वही चीज है कि ये चीज स्टार्टिंग डे से क्यों नहीं देखा गया. ताजमहल अच्छा इज जस्ट एन मधुस्मिता. एग्जाम्पल, हाँ, बिकॉज दैट इस इज ड्यू टू SO2 का करोजन एंड SO2 पोल्यूशन की वजह से है. हाँ, ओके, बट ओके. That's yes, to the point. The government need to take.
Government need to keep his or her sharp eye on those areas. Okay, ये तब वही जाके है ये कि इट कंट्रोल हो शुड बी सकता है। विजिलेंट फ्रॉम द डे वन। हम्म, तब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट। जब वो लेवल लिमिट से बाहर हो जाता है, तब जाके हम लोग कोशिश करते हैं इसे बंद करने के लिए, तब कोई रास्ता रहता ही नहीं है। ओके, अब जैसे यस। कि सर अगर अभी जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स अगर इनसाइड जमशेदपुर ही लिया जा रहा, अब उसकी एक प्रोजेक्ट है कि ग्रीन सिटी है तो लाइक नहीं, अभी तो रैंक पीछे चला गया है। यू नो, आई डोंट नो, रिसेंटली इन द प्रभात खबर और इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्मार्टेस्ट सिटी एंड द क्लीनेस्ट सिटी, the ranks been deteriorated. The Tata been slipped to 45th place, I think. 45th or I don't know, 40th place, 39th or 40th place. 2 हफ्ते की न्यूज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो तो ऐसे ऐसा हुआ है। तो सही सही, आप सही बता रहे हो कि ये मेजरमेंट, ये मेजर्स अगर पहले से ये लिया जाता है, बिफोर, तो बहुत हद तक हम इसे रोक सकते थे। हम्म, बहुत हद तक हम इसे रोक सकते थे। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, एक बात बताइए, प्लास्टिक क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? प्लास्टिक इज द बिग इशू, द बिग प्रॉब्लम। यूजिंग ऑफ प्लास्टिक जहाँ तक इज ओनली मुझे द बिग प्रॉब्लम। नो सर, प्लास्टिक देन ही अकेला एक प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक के और भी साथ तो और है। भी बहुत है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी है जो कि हम्म, प्रॉब्लमेटिक खुद सिनेरियो है हाँ, उसका। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो होता है, स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्रीज को डिवाइड भी किया जाता है। स्पेसिफिक कुछ क्या इंडस्ट्रीज हो सकता है? अगर मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज सेटअप पुट अप करूं, कंपनीज पुट अप करूं, क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहा है कि फ्रेंडली इफेक्टिव हो रहा है? सब बेसिकली फर्टिलाइजर बेसिकली इंडस्ट्री अगर कोई भी होती है वो तो उसमें केमिकल रहता है, तो और ऑब्वियस से बात है कि दे नीड टू डिस्पोज ऑल ऑफ देयर मटेरियल्स इनटू द रिवर। तो रिवर में जब वो डिस्पोज हो, रिवर या कोई भी एक स्टैग्नेंट वाटर में, तो वहां से बेसिकली बीओडी वो तो लो हो जाएगा ना। मतलब आसपास का जितना भी इकोसिस्टम वहां से वो हैम्पर हो जाता है। तो बेसिकली क्या अच्छा, करते हैं अभी जब से ये गवर्नमेंट लगाया है, तो अब क्या करते हैं वो सारे के सारे रिफाइंड क्या कहते हैं, रिफाइंड वे में वो, और किसी किसी एक लिमिट में ही वो अब वाटर में वो डिस्पोज करता है, और एक अच्छा, स्पेसिफिक उसका ऐसा रहता है। अच्छा। नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ, कुछ कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज होता है जो कि सबसे डेंजरस होता है। केमिकल प्लांट्स, केमिकल इंजीनियर, केमिकल जो होता है, या फिर सीमेंट फैक्ट्रीज जो होते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल, हर तरह से वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब इसके बिना और इसके बावजूद और कोई, मतलब इसके अलावा और तो कोई उपाय तो नहीं है ना। ये इंडस्ट्रीज अगर रहना है, मतलब आगे मतलब बढ़ना सर है, तो वही है हमें तो कि ये सेटअप करना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, अर्बनाइजेशन भी चाहिए, चाहिए, एवरीथिंग कुछ ना एम्प्लॉयमेंट, कुछ चाहिए। एवरीथिंग। तो एवरीथिंग तो बैलेंस नहीं होगा ना, कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, विदाउट मेकिंग एनी सेक्रीफाइस। बट लेकिन हाँ, कुछ सिर्फ हद हाँ। तक हम हाउ टू हम्म। कंट्रोल दिस मैक्सिमम हम कैसे कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे अभी फिलहाल, अर्बनाइजेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा जब हम लोग ही नहीं रहेंगे। तो डेफिनेटली, वी नीड टू बैलेंस आउट पर उस डेफिनेटली वी नीड टू बैलेंस आउट ना। जैसे अभी फिलहाल एक स्टेप्स लिया जाए, जितने भी जो टूरिस्ट होते हैं, whenever they visit to the जो सी बीचेस एंड ऑल, they used to make the entire places very dirty. तो अभी ये प्रिकॉशंस लिया जा रहा है कि समुद्र के अंदर कितना कुछ गार्बेजेस पड़ा हुआ है, उसको अभी क्लीन किया बिकॉज जा रहा है। बीच तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया रहता हम्म, है। हाँ। तो वो अभी बहुत सारा अभी इसको किया जा रहा है, इस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। आगे भी काम करेंगे, क्योंकि अगर सरवाइव करना है, जैसे अभी ग्लेशियर्स, एवरी टाइम ग्लेशियर्स अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गलते जा रहा है। और अगर यही प्रोसेस और यही स्पीड रहा, ग्लेशियर्स अगर इसी तरह से वो डिक्रीज होते रहा, मेल्टिंग होते रहा, तो एक टाइम आएगा कि पूरा होल वर्ल्ड में सैलाब आ जाएगा। और आप देखते होंगे कि अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, रशिया हुआ, किस तरह से वो फ्लड हो रहा है। ओके, हमारे जो लेयर्स है, स्ट्राटोस्फियर, लिथोस्फियर, जो अर्थ के जो लेयर्स है, वो डिस्ट्रॉय हो धीरे धीरे, उसमें दिक्कतें आ रहा है।
सन की सूरज की गर्मी धीरे धीरे कितनी बढ़ जा रहा है. नाउ द टेम्परेचर रीचेस टू 47 48. लुक एट द टेम्परेचर्स. ओके. तो बिल्कुल सही बात है. अगर हम इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे आगे से, आगे इस चीज में हम लोग अगर गौर रोशनी नहीं देंगे, देन इट विल बी, द सिचुएशन विल कम व्हेन इट इज, माने अनएक्सपेक्टेबल सिचुएशंस. एंड आप अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगी. एक प्रिडिक्शंस आया है कि इंसान नेक्स्ट 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स हमें देख के ही जाना पड़ेगा, इंसान गर्मी से मर जाएगा. डू यू नो दैट? इतना यस गर्मी, सर, क्योंकि अर्थ इतना गर्म हो जाएगा, अर्थ इतना गर्म होगा कि इंसान जो है गर्मी से मर जाएगा. इट्स बिकॉज ऑफ, और कोरोना इसी वजह से तो हिट हुआ है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस डिसबैलेंस ऑफ इन द नेचर, द कोरोना, द फ्लड, these are the things, unnatural calamities, these are being hit, and we are, the people are getting destroyed. And by after 10 years ना, ये कहा गया है predictions, these all are the predicted that after 5 साल 10 साल के बाद ना, इंसान जो है गर्मी से मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पा है. It's very difficult to survive during the hot humid season. So it's because of this ecological disbalance. Or yes, we need to have precautions, we need to take very much precautions. और आप जानते हो, you will surprised to know that आर्टिफिशियल प्लांट्स अभी दुबई में, दुबई तो सैंड एरियाज है, वो तो यस अभी सर। इज पॉसिबल. वहां पर अभी एक न्यूज आया, लेटेस्ट न्यूज, आई एम वेरी मच फॉलोइंग ऑल दिस लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल. अभी कहाँ से वो लोग एक मिट्टी ला रहा है. हाँ, पूरा मतलब शिप में वो कंसाइनमेंट जा रहा है. पूरा वो पेड़ पौधे वहां पर अभी धीरे 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 ग्रीनरीज किया जा रहा है. आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल्स, आर्टिफिशियल वाटर पूल्स, पूल्स आर बीइंग सेटिंग ओवर देयर. क्योंकि इतना गर्मी बढ़ गया है. अगर यहाँ पर 47 48 डिग्रीज है, आप सोचिए ना, तो वहां पर क्या हालत होता होगा. 65 से माने वो सहन करने, बर्दाश्त से बाहर हो गया. नाउ दैट इज व्हाई देयर गवर्नमेंट्स आर टेकिंग वेरी, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू टेक दोस प्लान्स, execute those plans. And they, with a huge consignments, ship consignment, वो अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मग्स, आर्टिफिशियल मग्स, और वो ट्रीज ग्रीनरीज अभी धीरे धीरे वो कर रहे हैं. इसके अलावा कोई चारा नहीं है टेम्परेचर को अगर थोड़ा सा कंट्रोल ना किया जाए. अगर यहाँ 47 48 है, तो आप सोचिए अरब कंट्रीज में क्या हालत होता होगा. इज इट पॉसिबल फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन टू सर्वाइव ओवर देयर? नो. दिन में तो कोई काम होता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का. एवरी वर्क बीइंग डन इन द इवनिंग सेशन, इवनिंग्स एंड ऑल. तो यस, इट्स द गवर्नमेंट पहले दिन से इसे स्टेप्स लेना चाहिए. अब कुछ कुछ ऐसे लालची इंसान होते हैं जो अपने पैसे के मतलब के लिए हम लाइफ झोंक देते हैं. और क्या कर सकते हैं अब इसमें. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो. इट्स अ वेरी नाइट सेशन, और बहुत अच्छा लगा ये. बहुत कुछ हम लोग डिस्कस किए इसमें. तो इसका रेजोल्यूशंस क्या है? द फर्स्ट एंड फाइनल रिजल्ट है, इसका रेजोल्यूशंस क्या है? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द रेजोल्यूशंस? वही तो एक सोल्यूशंस में हमें आना चाहिए ना. कंट्रोल करके तो कंट्रोल तो, अब तो कंट्रोल नहीं हो सकता है. जैसे मैंने समझा, आपने समझा, चलो हम लोग कंट्रोल करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, whenever I used to go to the shops, whenever I used to go to visit any malls and all, I always carry my bags. I Okay, I always carry the bags. यस सर। Whenever I used to go to the markets for purchasing fruits, vegetables, and all, I always carry bags. Okay, that is why the shop owners of those particular shops, they are also very happy. बोला सर देखिए, आप अच्छा कर रहे हैं सर, आप प्लास्टिक नहीं ले रहे. नो, आई नेवर कैरी, आई नेवर ब्रिंग डाउन द, आई मींस जब रेयर केसेस हो जाता है तब नहीं कर सकते, तब हमें प्लास्टिक लेना पड़ता है. लेकिन मैक्सिमम 90% आई एम टेलिंग यू, आई एम अवॉइडिंग दिस यूजिंग ऑफ प्लास्टिक्स. तो मैं तो जाग गया है. वो कोई अगर दूसरा जाग जाए तो अच्छी बात है, तब इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. यस सर। तो चलो ठीक है. आई इंसिस्ट यू टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि यहाँ किसी ने कॉपी करके पूरा छाप दिया है, ये सही नहीं दिया है. आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक डेफिनेशन लिख लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन. व्हाट इज द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डेफिनेशन? So wait, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम.
You are you are using Geo, na? Yes, sir. No, sir. Geo I'm का? not using Geo. Currently, I'm using Wi-Fi, BSNL Wi-Fi. ओ गॉड, दैट्स व्हाई। वो जैसे पिक्चर मूवीज में जैसे कभी कभी स्पीड बढ़ा देने से क्या होता है, Yes, आवाज sir. ऐसा आ जाता है, आवाज ऐसा हो जाता है। बीएसएनएल, ओके। क्या टैरिफ है बीएसएनएल का अभी फिलहाल? Sir, it's 599 per month, monthly. 590 मंथली, 599? हाउ मच मींस 30 यू Mbps. कंज्यूमिंग? अच्छा अच्छा, अनलिमिटेड, ऑल आर अनलिमिटेड डेटा Yes, एंड and ऑल? call. Sit and we'll have a landline. Landline is free. ओके, Calling is free. वेरी गुड। वाईफाई, ओके, ठीक है, चलो। What is environmental management system? Write down. What is environmental management system? Yes, sir. An environmental management system, bracket में लिखो EMS, E capital, M capital, S capital, close the bracket. An environmental management system, EMS, is a tool Yes, sir. that is growing, that is growing continuously for the companies. That is growing continuously for the companies. Full stop. Full stop. Most companies, most companies most companies आप लिख पा रहे हो? Are you Yes. able to write? Most Yes. companies need to manage their products. Most companies need to manage their products, comma, services. Most companies need to manage their products, comma, services. Employee safety, employee safety, comma, public opinion, public opinion, comma, environmental impact, environmental impact, and other related opportunities, and other related opportunities. Full stop. Other related opportunities. Full stop. Just change the paragraph. Change the paragraph. An EMS, that is environmental management system, encompasses an environmental management system encompasses the methods
the methods the methods and means, MEANS, and means to manage, and means to manage all of these aspects, all of these aspects, these, THESE, all of these aspects within the organization, within the organization. The following important points, the following important points, the following important points explores, the following important points explores environmental management systems, So repeat environmental. management systems with following guidance, with following guidance. Number one, number one, Yes, can I sir. say? Can I Yes, repeat? sir. How to implement an environmental management system? How to implement, how to implement an environmental management system? Number two, cost, cost require, cost require for the systems, for the system to run the assessment, for the system to run the assessment and awareness, and awareness. Next, how to improve, how to improve the quality of environmental management system, how to improve the quality of environmental management system. Okay, written. Yes, sir. Okay, so these are the points. uh, Actually the points have been also been given over here, but it is in a very means not in a proper way, not in a proper sequences. So somebody, if any students going to read those points now, they will
they will really they will really get puzzled while reading these points, because they are been in a very haphazard way. Okay, uneven points are there. So okay, so you just read those points, and still if you have any difficulties, you just ask me. Also, yesterday I think you have not attended my class, so ma'am Yes, has sir. told me to record the session, and already ma'am has sent you the record session, so you just go through the record session, and still if you find any difficulties in those record sessions, some points which has been not been clear to you, you can ask me. Okay, so tomorrow we will going to start about the ISO 14,000. What is ISO 40,000? It is simply as a body of knowledge you need to write. कल हम लोग जब अगर क्लास आप अटेंड करते हो, अदरवाइज मुझे ऑनलाइन क्लास मतलब वो मुझे रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, तो कल ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ISO 14,001 का डेफिनेशन क्या है, ISO 14,001 इज टू 2015 इसका डेफिनेशन क्या है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर दिया नहीं गया है. It's not been clearly mentioned over here, though it has been given, but the words are been not selective words are not been given over here. So somebody, ये डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम कल हम ये चीज थोड़ा सा आपको बता देंगे. ओके, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट. जैसे कंपनीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, why do companies want to pursue an environmental management system guided by ISO 14001? A very very important question, may will going to come to you at the time of your examinations. The question is, why do companies want to pursue an environmental management system guided by ISO 14001? Listen, ISO certified जो होता है 14,000 2000, ये सब का एक अलग अलग डेफिनेशंस है, और इसका अलग अलग प्लान्स है जिसे हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एग्जीक्यूट करते हैं. So we need to know very much. We need to know all what is ISO 14,001, why it is ISO 14,001 and 2015. What are the discrepancies are there? Why do companies pursue 14,001 instead of 2015? Lot of questions may going to come related to ISO Indian standard. Okay, so we're going to read tomorrow. Okay, Okay, sir. if you're going to attend the class, please tell me Yeah, I that will be sir, आज attentive from now onwards. प्लीज तो बता देना मुझे कि सर आपने कहा था ISO 14,001 के बारे में लिखाना है. बहुत मतलब अच्छा है, मतलब दिया नहीं गया है. आई नीड टू मेक प्रिपेयर अ नोट्स ऑफ दिस, and I will be going to provide it to you. How this ISO 14,001 will influence the growing market? This is another important question. How the ISO 14,001 going to influence the growing market? This is another important question जिसका यहाँ पर अच्छे से definitions या कुछ भी नहीं दिया गया है. नेक्स्ट है, what are environmental management system? What is नहीं? Look at the questions. What are environmental management system? Okay, and what are the components of environmental management system? अब जो करेंगे ना क्लास, अगर आप लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा. दीज आर द थिंग्स, एंड इफ यू टेल मी नो सर, आप सिर्फ बता दीजिए, देन आई कैन गो विद दिस अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर सुइटेबिलिटी. ठीक है मधुस्मिता, लेट्स कॉल इट ऑफ ए डे. आज छोड़ देते हैं. Okay, sir. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू.